SST is going on, ना? Which chapter is there? पढ़ा रही हैं अभी, जब लौटते हैं बात करेंगे. It is your classroom copy? Is it your class copy? Okay, good. I want to see your copy. Stand up. Subject कौन? Science. Writing work is going on or explanation? Writing work is going on. चलो, सामने से देखिए, हम पेन से खोल के देखिए. एक मिनट. लाइन में कैच में जाइएगा, जिसका टर्न हो गया. इधर 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 सर एक मिनट सर एक मिनट जी जी हो गया. हाँ हाँ Chemistry is going on here. What is the topic? Symmetrical isometry. Okay. How many chapters you have completed up to this moment? 3 lessons. Three. And the first report, when you are the paper pattern. Yes, ma'am. You just tell me what is it? आएंगे 10 नंबर्स के 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर और मतलब न्यूमेरिकल्स कम आएंगे 13 मार्क्स के और Held on our center, other centers where our exam will conducted. So what is the advantage? There is advantage is that some teachers prefer many students for many purpose, but in this school that's not. But in many schools there are, due to their parents' reputation and all that. And for this we have many. That is one reason. And another reason you just tell me. Another reason is that we will get many advantages by this. We will not afraid in our college life. We will get prepared. Okay, sit down. You know about that. But wherever practicals were not, in these subjects, BSc, commerce stream is here or not? no Achha. So in many subjects, 100 marks paper were coming na previous year. Now 20 marks for internal assessment. 20 marks, you have total 20 marks for internal assessment. And there MCQ questions will come, MCQ questions, 4 answers will be there and you are to take 1. Okay? So possibility of getting marks, that will be. Okay? बहुत आसान है अब नंबरों को पाना. 20 marks आपको ऐसे मिला. Then internal assessment. And for that 20 marks, thorough study is required. Thorough study. Concept should be clear. If any topic is going on, suppose this is going on, each and every question, whatever you are getting, you just solve it and ask your teacher also. Because many times you have some problems. You just write it and solve it. For that, now up to this moment, CBSE has not prescribed any book. But we will take from the market because we are to prepare for that. So conceptual basis questions will come in 20 marks. Then practical will be outside. Why it is? Because sometimes it happened in previous years that students were getting 30 marks in practical and theory marks 0.
same thing you have told, na, due to reputation of parents, due to some other reasons, what. But it doesn't mean that school don't have anything there. कि जो आप करोगे वो करोगे. You have to go in proper uniform. All the things, project work, whatever teachers will give, that you have to prepare well. And then your internal teacher will go there and wherever your center will be, that teacher will be there, and some examiner will also. In some schools without practical labs, practical was going on, and students are getting marks. So all the things, whatever CBSE, सारी चीजें जितनी भी होती हैं वो स्टूडेंट की हित में होती है, क्योंकि आप 12th पास करके 30 पे 30 होके चले जाओगे, and after that you have to do many things. You have to become scientist, you have to become IITian. Then what you will do there? The school has completed its responsibility. स्कूल ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर दिया, अब आप आगे चाहे जैसे जाओ. तो इसके लिए बोर्ड ने किया है, वॉट एवर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर वी आर टू फॉलो, एंड वॉट एवर टीचर्स आर, बिकॉज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वॉट एवर टीचर्स आर सेइंग इन द क्लास, दैट यू आर टू फॉलो. अब जो कोचिंग वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती किसी चीज़ की ना, उन्होंने तो पैसा लिया, पढ़ा लिया, आपको अपने पैसा दे दिया, उनका बहुत पूरा हो गया. लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की होती है कि वो रिजल्ट कैसा है ना. तो ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी आपके टीचर्स की है, आपके प्रिंसिपल्स की है. तो वॉट एवर दे से यू हैव टू फॉलो. ओके, थैंक यू सो मच, और आप अच्छे से पढ़ाई करें. पीछे मत लीजिए. पता है 2 तरह की मैथ्स है, ये सीबीएसई ने इस साल से अप्लाई किया है, आप लोग को मालूम है? 10th में अभी पेपर जो 20 में देने जा रहे हैं, ये 9th है क्या? 8th नहीं, हम 10th थे. 10th उधर है, 10th आई वांट टू सी दैट. ठीक है, हम 6th 7th देखते हैं. Okay, now you will say. Thank you, ma'am. Hello. I want to just tell you. What's your good name, madam? Aprajita Mishra. This subject science is going on. Yes, I'm biology. Bio. Sit down. Sit down. This madam is explaining very nicely. I have listened 2 or 3 times, and I think you are all getting it also. Okay. So there is a major of basically prefer कर रहे हैं. Now I tell first, na? You have told that I know it, so that I started asking. In 2020, you are going to appear in the board examination. So 2 type of maths are there. स्टैंडर्ड एंड बेसिक. अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी आपको क्लियर नहीं है जब मैंने पूछा. स्टैंडर्ड और, लेकिन रिजल्ट तो आपको देखना है अपना ना. जो स्टैंडर्ड मैथ्स लेगा और वो ठीक है, क्लास एक रहेगा, टीचिंग एक रहेगी, सिलेबस एक रहेगा, कोई उसका अलग से क्लास नहीं होगा. सब लोग बेसिक और स्टैंडर्ड वाले साथ ही पढ़ेंगे. बस पेपर थोड़ा सा लोअर साइड बेसिक का आ जाएगा और स्टैंडर्ड का हायर साइड आ जाएगा, क्योंकि उनको जो मैथ्स लेंगे ये ले लेगा, उसको मैथ्स बेसिक मैथ्स आम चल जाएगा, और आगे उसको कॉमर्स में जाना है तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा. आपका स्टैंडर्ड मैथ्स है, अभी आपका वही वो भरेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर मिलेगा.